Hello friends, today we are learning Python dictionaries. Now, what is dictionaries first of all? Then, dictionaries are used to store data values in a key and values pair. कौन से फॉर्म में डिक्शनरी की डेटा है स्टोर हो रहा है? Keys and value. Name is a key. Here you can see name is a key and James is a values. Dictionary items are ordered, changeable and does not allow duplicates value. What is the meaning of ordered? When we say that dictionaries are ordered, it means that the items have a defined order and that order will not change. And what is the meaning of unordered? Unordered means that the item doesn't have a defined order and you can't refer to an item by using an index. Now, changeable. Changeable means you can add and remove the data here and does not allow duplicates value. You cannot add the duplicates value here. If you are adding the duplicates value here, then it will override this value. Dictionary items are presented in key and values pair and can be referred to by using the key names. किससे रिफर किया जाता है? की नेम्स से. डिक्शनरी आर रिटन विथ कर्ली ब्रैकेट्स. डिक्शनरी किसके साथ लिखी जाती है? कर्ली ब्रैकेट के साथ. Now how to declare Python dictionary, how to access items, how to add and remove items, how to change values in the dictionary, what is a nested dictionary. Let's see with the practical example. First of all, how to declare the dictionary. See here, my variable is a equal to, do the curly brackets here and give the key and value. My key is name and value is James. So this one is the dictionary. My key name is name, city and year and value is James London and 1999. Okay. Now I have declared here print A. Let's see the output. Here I have declared year 2005 and here I have declared year 1999. It's a duplicate key. See here, names equal to James, city equals to London and year equal to 2005. जो लास्ट वैल्यू है उसको ओवरराइट कर दिया है यहाँ आगे की वैल्यू के साथ. 99 है वो उसके साथ ओवरराइट किया गया है. Now how to access the items? You can access the items of a dictionary by referring to its key name inside the square brackets. आप की नेम देख के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देख के आप उसको एक्सेस कर सकते हो. How you can access? See, here I am declaring another variable x equal to a and give the key name here. Let's suppose I am giving here name and now I am print x here. Let's check the output. Okay, see here I have accessed the name with the key. I have given here name and here you can see the output. Our name's value is James. You can see here James is in the output. There is also a method called get methods that will give you the same result here. How we can use the get method here? See, let's suppose I have declared a variable x equal to a dot, use the get method here and give the key name here. Okay, again I have given the key name is name and let's check the code. Okay, here you can see James is in the output
Now, how you can get the keys here? We will see here. यहाँ हमने क्या किया था, वैल्यू से उसको हमने आउटपुट में लिया है, राइट. नाउ हाउ टू गेट द कीज. The keys method will return a list of all the keys in the dictionary. How you can get the keys? Let's see. I am declaring variable x equal to a dot keys and print x here. Let's check the code. Okay, here you can see dict key is dictionary key is name, city and year. हमारी कौन सी की है यहाँ पर, name, city and year, right? Now how to get the values. Values आप कैसे get करोगे? The values method will return a list of all the values in the dictionary. यहाँ पर क्या किया हमने, की access की. Now we are accessing the value. How you can access the value? See here, x variable equal to a dot values and print the x. Let's check the code. Okay, here you can see dict values यानी dictionary values is James London and 1999. ठीक है, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो डिस्प्ले हो गई है. Now, how to get items? The items methods will return each item in a dictionary as a tuples in a list. How you can access the items? See here, x equal to a dot items here and print the x. Let's check the code. Now see here, dictionary item is name James, city London, year and 1999. जो हमने की वैल्यू से दी थी डिक्शनरी के अंदर वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है. Now if you want to access the item using a for loop, then how you can do? See here, declare the loop here for x in a print a of x. Now let's check the code. See here, जेम्स लंदन एंड 1999 फॉर लूप है, उसमें सीधी हम वैल्यू है वो 1 by 1 आइटम को एक्सेस कर सकते हैं. Now let's suppose if you want to check the if key is exist or not, then how you can do? To determine if a specified key is a present in a dictionary, use the in keywords. How you can use these keywords? See here, if check the city in a, then print yes. क्या करना है कि अगर सिटी की है अगर हमारी डिक्शनरी में तो रिटर्न क्या करेगा, yes. Let's check the code. So here you can see it is in our dictionary. Now how to change the values. Values आप change कैसे कर सकते हो? You can change the values of a specific item by referring to its key name. कैसे करना है, की नेम देके आप वैल्यू से वो चेंज कर सकते हो. How you can do? See here, a give the key name here. Let's suppose I'm giving here city equal to, now I'm changing the value here Paris instead of London. Print a. Okay.
Let's check the code. Okay, see here, I have changed the value. Name is equal to James is as it is. City is equal to Paris. लंदन था, यहाँ पर देखो सिटी लंदन था, मैंने वैल्यू चेंज कर दी, उसकी क्या कर दी, पेरिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आउटपुट में दिख रहा है। एंड ईयर इज इक्वल टू 1999। नाउ हाउ टू अपडेट द डिक्शनरी? The update method will update the dictionary with the items from the given arguments. The given arguments must be a dictionary or an iterable objects with the key and value pairs. How you can do? See here, a dot, use the update method here. In the curly braces, give the key name value. I am given here year 2023. Right? Print A. Now let's check the code. See, update and change values. Here you can see, चेंज में मैंने क्या किया था, सिटी लंदन को चेंज किया था। ठीक है, वहां पर मैंने दिया था पेरिस। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट आई हैव यूज हियर अपडेट मेथड एंड यहाँ पर मैंने क्या किया, ईयर को चेंज किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप आउटपुट में ईयर 2023 इज हियर इन द आउटपुट। ओके, so you can use a change method or an update method. Now how to adding item in a dictionary? Dictionary के अंदर item आप कैसे add कर सकते हो? Let's see with the example. A in the bracket I am giving here new key is a color and print A. Let's check the code. Okay, you can see names equal to James, city equal to London, year is equal to 1999. This is already in our dictionary and I have add new key and value here, color equal to red. So you can see here color equal to red. Now how to remove an item from the dictionary? How we can do this? See here. Let's suppose first of all I am using here pop method. A dot pop, give the key name here. I am giving here year. Let's check the code. Okay, here you can see name is James and city is equals to London. Year 1999, it is deleted, it is removed. So the pop methods removes the item with the specified key name. यहाँ पर क्या दिया मैंने, key name दिया है, उससे वो remove हो गया है. Here you can also use the delete method here, delete method here. Now I am using another method, pop item. What is a pop item? Then the pop items removes the last inserted item. जो last आपने insert की है वो item क्या हो जाएगी उसमें से delete. How you can do? See here, a dot pop item and print a. Let's check the code. Okay, see here, names equal to James and city equals to London. लास्ट वैल्यू जो है ईयर इज इक्वल टू 1999, वो क्या हो गया, डिलीट हो गया. पॉप आइटम में से क्या होने वाला है, रिमूव द लास्ट इंसर्टेड आइटम्स. नाउ हाउ टू क्लियर द डिक्शनरी? डिक्शनरी को क्लियर कैसे किया जाता है? वो क्या करेगा, क्लियर मेथड क्या करेगा, इट्स एम्प्टीज द डिक्शनरी. हाउ वी कैन यूज दिस मेथड? सी, ए डॉट क्लियर, तो क्या करेगा, इट एम्प्टीज द डिक्शनरी, सिर्फ डिक्शनरी को एम्प्टी करेगा. लेट्स चेक द आउटपुट. Here you can not see the items because it is clear, it is empties in the dictionary.
नाउ हाउ यू कैन डिलीट द डिक्शनरी कंप्लीटली। यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लियर मेथड का यूज किया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओनली कर्ली ब्रैकेट से वो दिख रहा है, अंदर की जो आइटम्स थी वो क्लियर हो चुकी है। बट नाउ हाउ टू डिलीट द डिक्शनरी कंप्लीटली, डिक्शनरी को ही डिलीट कर देना है कंप्लीटली। हाउ यू कैन डू, जस्ट यूज द कीवर्ड डिलीट, DEL, डिलीट, and give your dictionary variable here delete है। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी डिक्शनरी है वो डिलीट हो जाएगी। अगर यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट से ए प्रिंट कर रही हूँ तो क्या आएगा, फिर एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी है वो डिलीट हो जाएगी हमारी। Here I have used print a but that will give a error here. Why? Because dictionary is already deleted here. You can see here delete a. Okay, let's check the code. See, error is occurred here because dictionary is completely deleted here. That's why error is generated. Okay? Now, how to copy a dictionary? First of all, you cannot copy a dictionary simply by typing a is equals to b. सपोज यहाँ पर आपको कॉपी करना है तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि न्यू वेरिएबल दो b इक्वल टू मेरा डिक्शनरी वेरिएबल a। यहाँ जैसे मैंने किया है b इज इक्वल टू a, तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ बिकॉज b is my new variable will only be a reference to a and changes made in a will automatically also be made in b. So we cannot copy like this. How we can copy the dictionary? Then you have to use a copy method here. Let's suppose I'm giving another variable b is equals to a dot copy, and now I'm printing this b value. Let's check the code. Okay, here you can see the names equal to James, city equal to London and year is equals to 1999. वो कॉपी मैंने किस में किया है, b के अंदर। Here I have print b variable here and I have copy a dictionary into a b. Okay, और another way is you can use the dict method here. आपको कॉपी करना है तब दूसरी मेथड यूज कर सकते हो। व्हाट इज द सेकंड मेथड हियर, सी b is equal to, use the dict method here, dict a, तो भी क्या हो जाएगा, वो कॉपी हो जाएगा। मेक अ कॉपी ऑफ अ डिक्शनरी विथ द dict functions. Okay, so let's again check the code. Okay, here you can see name is equal to James, city is equals to London and year is equals to 1999. मैंने क्या किया, ए डिक्शनरी को बी के अंदर कॉपी किया एंड बी को यहाँ पर प्रिंट किया है। ओके, now how we can add a nested dictionary. Now what is the first of all nested dictionary? A dictionary can contain a dictionary. This is called a nested dictionary. So how you can add here, how you can declare here, see, let's suppose my first dictionary name is apple 1 is equals to, give the curly braces here and give the key value here. My second dictionary is orange 1 is equals to curly braces and give the key and value. And my third dictionary is again apple 2, okay, equal to color green. Now what we are doing here, we are creating another dictionary variable like fruit family, and now I am giving here our dictionary name, do the curly braces and give the here key apple 1 is equals to apple 1
comma orange 1 equal to orange 1 comma apple 2 colon apple 2. Okay, so this is our nested dictionary here. What am I doing here? Apple 1 is our first dictionary, orange 1 is our second dictionary, apple 2 is our third dictionary. And what is the key value here? Apple की क्या है? कलर रेड, orange का कलर है orange, and apple 2 का कलर है green, right? और नाउ यहाँ पर फ्रूट फैमिली में मैंने क्या किया, ये जो तीनों की थी एप्पल 1 ऑरेंज 1 एप्पल 2 वो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दी. सो ये मेरा डिक्शनरी बन गया है, नेस्टेड डिक्शनरी. नाउ हाउ टू एक्सेस item in a nested dictionary, how you can access this item of a nested dictionary. So to access item from a nested dictionary, you use the name of the dictionary starting with the outer dictionary. outer dictionary है उसका यूज करके हम क्या करेंगे, डिक्शनरी को एक्सेस करेंगे. how you can do this, see, first of all I am giving here print and give the outer variable here. So fruit family do the square bracket and give the inner dictionary variable here. So this one is the like apple 2 and key name here. Now let's check the code. Okay, here you can see green is in our output. What I have declared here, see, fruit family is my outer variable. This one is the outer variable. Apple 2 is my inner dictionary variable. So apple 2 is my inner dictionary variable. And I have give here a key name here color. Okay. So क्या एक्सेस हुआ, एप्पल 2 का कलर कौन सा है, तो then green. So you can see it is in our output. Okay. So this all about Python dictionary. I hope so this video is useful for you. प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.